and welcome to another episode of the Tech Mindset. आज another generative AI related topic. People often confuse generative AI with the tools that generative AI deploys to create content, like with ChatGPT. Now, in our recent podcast, we have both with humor and with seriousness discussed ChatGPT, prompt engineering, and other related topics. So please go and check those videos, very informative. So आज हम डिस्कस करेंगे generative AI, not ChatGPT, generative AI. So Gautam, क्या है generative AI? Well, as it is fashionable, ChatGPT से ही पूछा मैंने और pre-generated text मेरे पास है. मैं एक बार ज़रा पढ़ देता हूँ. What is generative AI? As per ChatGPT, it says that it is a branch of artificial intelligence that enables computers to generate new content by learning from existing data. It uses complex algorithms and models to understand patterns and structures in the data, allowing it to create original and realistic outputs. For example, it can generate lifelike images, compose music, or even write stories. तो अब चैट जीपी तो ये कह रहा है, बट इन माई व्यू इवेंचुअली what we think generative AI actually is that eventually जो उसने sources बोले हैं, right? Those data sources are still already pre-existing content which is available publicly on the internet. Or if they have sold some proprietary material and bought, they have not been very transparent about all the material from where these large language models get the language which actually powers them. So that's still there. उसी के basis पे smartness बस इतनी है कि what it has at a very reasonable level of intelligence, we have to give it to them. It can fuse concepts, topics, images, and even algorithms code to generate content, which can again be the same. Output वही है, input output अगर याद है तो output वही है, back to text, images, video, code, algorithms. अब इसका obviously बहुत सारे implications है which we'll get into, but most importantly the third thing is that in the conversational form, जो मुझे सबसे ज़्यादा interesting लगा from generative AI is that it is also able to hold context. कि जैसे आपने कोई पहले उसको सवाल पूछा तो वो कंटेंट भी उसने यूज़ किया with along with the rest of the large language model to give you an answer. Let's say I'm saying, hey, update my CV, कि मेरी CV मुझे अपडेट करनी है और मैंने कुछ उसको डेटा दिया, वो समझ गया कि भी CV के बारे में बात हो रही है, रेज्यूमे के बारे में, प्रोफाइल के बारे में बात हो रही है, तो उसके वो होल्ड कर पाता है उस कॉन्वर्सेशन. तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है as part of generative AI, apart from just generating content. But do you not think basically it is about context all this time? Data कहीं से उठाया, language model से समझा कि context क्या है, and then just regenerate the same information, keeping the context in the center. यही conversations में हो रहा है, यही शायद image generation में हो रहा है, क्योंकि बंदर कैसा दिखता है, हाथी कैसा दिखता है, डोरेमोन कैसा दिखता है, आप इनको मिक्स करके बनाना चाह रहे हो, वो आपने कॉन्टेक्स्ट दिया and it's doing the trick. Absolutely agree with that. That is where I think, yes, generational power is fine. कि it can generate some new content, understand stuff. कि मैंने एक पेपर लिखा है तो उस पेपर की समरी वो लिख सकता है, for example. But ये जो context है ना, कि जब मैं उसको बोलूँ, hey, can you write me a summary which I can publish in a blog? Can you write me a summary which I can publish, let's say, on this podcast? वो smartness better है. Of course, it needs to still evolve. This is still the starting point of it. That is where generative AI has a lot of interesting capabilities. Absolutely. So, anyone who has been into technology or has been forming technology, हम सुन रहे हैं AI के बारे में कुछ भी नहीं तो at least for over half a decade now, right? तो अब ऐसा क्या चेंज हुआ है जनरेटिव AI में जो, अगर मैं इसको ट्रेडिशनल AI बोलना चाहूँ, which was cutting edge by the way until 6 months ago, तो उस traditional AI versus generative AI, where do you actually see the major difference?
very interestingly, I asked the same question to ChatGPT. यार तुम शॉर्टकट लेने लगे हो, मैं देख रहा हूँ हर चीज ChatGPT से पूछ रहे हो। मैं पहले उसका सब आंसर पढ़ देता हूँ, फिर आप अपने ओपिनियन हम दे देंगे। वो कह रहा है कि मेन डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव एआई एंड नॉर्मल एआई लाइज इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कैपेबिलिटी। नॉर्मल एआई और ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल एआई focusing on specific tasks designed to provide specific output based on predefined rules and patterns. अब ये बहुत important है, predefined rules and patterns. However, generative AI को ये अपने आप को creative बता रहा है कि it is actually creative. You go and read its definition, it's saying it's also known as creative AI because it can generate new content. Now, there is a lot of debate is on this, that is it really new content? And in fact, because it is still based on existing content and applying some patterns and जो normal AI की methods हैं, creative people, we'll share some links on this video of how creative people have started suing OpenAI, for example, on some of the content that is generating, because एक artist के नाम पे किसी ने prompt दे दिया कि इस artist के type का मुझे painting बना के दे दो, और वो काफ़ी रिजेबलिंग पेंटिंग उसके टाइप का बना रहा है, उसके स्टाइल का, तो स्टाइल की कॉपी अच्छा मार पा रहा है. ऑफ कोर्स इट्स नॉट क्रिएटिंग द एग्जैक्ट सेम पेंटिंग, पर वो ये है कि जैसे हम नकल करते थे ना अपने एग्जाम में, कि थोड़ा सा ना अपने सामने वाले का लिख लिया और हो गया, लेकिन स्टाइल तो उसी का रह गया. तो वो लोग शू करें कि भाई मेरा स्टाइल आप कैसे कॉपी कर सकते हो बेसिकली. तो ये कह रहा है कि हम नेट न्यू कंटेंट बना रहे हैं. I would still debate about that part of the net new content. It is still generated based on existing content, which is important to understand. Now the predefined rules and patterns, again, because this is opaque, it is very opaque that what patterns are they using to generate this content, how have they taken care of the biases, ethical concerns, etc. Or even sometimes जैसे हम बोलते हैं कि hallucinate कर जाता है AI, कुछ भी आंसर, गलत आंसर भी दे देता है in its creative, it takes creative license basically. Just gets too creative. हाँ, so that debate will be on for a while, but in my viewpoint, it is still based on some patterns अभी भी. Of course, the complexity in which those patterns are being applied across whatever algorithms you want to call it, transformer से लेके neural networks, जिसके ऊपर और भी research चल रहा है, there's a difference. But one thing which will make a significant, मेरा जो definition है normal AI और generative AI में जो difference है वो ये है कि normal AI same dimension, same prompt पे same answer दे, because वो patterns है. बीच में क्या हो रहा है, मे बी same pattern follow कर रहा है, but generative AI ना, निमेश शायद ये सवाल पूछेगा तो शायद अलग आंसर देगा, जब उसका मन करेगा तो कुछ और आंसर देगा. ये डिफरेंस है बेसिकली. मे बी लगभग वही आंसर होगा ऑन सम ऑफ द टॉपिक्स. ये एक इम्पॉर्टेंट वे टू डिफरेंशिएट है बिटवीन नॉर्मल एंड जनरेटिव एआई. I think again it's open to debate, मगर ना it sounds more like the crux is changing the unstructured instruction into structured instruction, जो कि conventional AI में structured input ही होता है. Therefore, for a locked set, you'll always receive the same output. Whereas यहाँ पे मैं कैसे सवाल पूछ रहा हूँ, तुम कैसे सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारे साथ उसका क्या context चला आ रहा है AI के उस agent का, a lot of things come into play, isn't it? And that's where I think there is real creativity. मैं जैसे तुझसे बात करता हूँ, मैं वैसा शायद अपने गार्डनर से बात नहीं करूँगा, right? And this is where I see those creative blips in the system, but also I see this as a problem. Information has to be the same if the question asked is the same, isn't it? If it is factual information, and this is where that's why it's trying to distance itself from facts. कि जब भी facts figures टाइप की बात करो तो बोलता है जाके आप चेक कर लिया करिए, लेकिन अपने आप को क्रिएटिव में हमेशा बोलता है कि क्योंकि अगेन क्रिएटिव में लाइसेंस है, तो
वहाँ पे बोलता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, बट मुझे लगता है कि उसमें भी होल पंच किए जाएंगे, लाइक द एग्जांपल्स दैट आई गेव यू बेसिकली. सो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला, बट आई लाइक द स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड pattern example as well, because what it is also doing is unstructured information का unstructured answer भी वो दे पा रहा है. So there is a lot of conversion going on. हाँ, मैं मेरे परे है थोड़ा कि ये कैसे हो रहा है. थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो पता चल जाएगा. Obviously all these algorithms will come out in all the marketing materials, but behind the marketing materials what is happening technically we'll have to still wait and see. Absolutely. Now there are some social implications I wanted to talk about, मगर आज के लिए रखते हैं बस इतना ही. Please continue watching our series, and we will talk about some interesting social aspects of generative AI. Thank you very much, Gautam. Speak soon and stay tuned. Thank you.